मैम एक्चुअली जो आपने कहा कि गूगल का जो मैंने दूसरा वाला सेंड किया, तो वो जो नोट्स थे मैं उसमें पढ़ पढ़ के ट्राई कर रही थी और इसीलिए मैंने ग्रुप बना के किया। तो गूगल ग्रुप इज डिफरेंट थिंग, वो भी मैं यस बता दूंगी लास्ट में, वो भी टॉपिक है, मैं गूगल ग्रुप बता दूंगी। ठीक है। मैम, ये वैसे 3 डॉट्स आप क्या बोल रहे थे, मुझे ना वो नहीं समझा। क्या चीज 3 डॉट वाला? मैं वो चार्ट के बारे में बता रही थी, हाउ टू मूव द चार्ट इन द न्यू शीट। जो डे बिफोर यस्टरडे जब मैंने बताया था क्रिएटिंग चार्ट, तो आई हैव गिवन एन टास्क कि मूव द चार्ट टू द न्यू शीट। सो जब आप चार्ट पे जाते हो, देयर इज अ 3 डॉट गिवन देयर। When you click on that 3 dots, you will get many options. In that option, there is an option called Move Chart to the new sheet. So it will ओके, go to the एंड वी new. कैन आल्सो कॉपी पेस्ट, राइट? No, no नो। need of copying and pasting. ओके ओके You move it to the new chart page. ओके। So you will और get मैम, a big view of that chart. अच्छा मैम, आपने फोल्डर कलर करना कैसे वो बताया, पर आपके एक दो फोल्डर्स में ना मैंने इमोजी भी देखा, किसी में वो एरोप्लेन बना हुआ है, वो भी बता दीजिए, बहुत क्यूट लग रहा है। फोल्डर में जो इमोजीज लगा है, कुछ नहीं करना है मैम। When you rename that folder, right click your thing and you will get an emoji option on the top and insert that emoji. थैंक यू। Welcome. So today is the third day. How is the Josh? Very high. Hi, ma'am. वो तो मुझे दिख रहा है. I'm happy also. As you are doing your work, you are sending the assignments. I'm very happy. So I can see. Now again, the same thing, you have to follow the decorum and the protocols. So keep your microphone mute unless and unless it is called. Note your questions and you can ask afterwards. Help desk पे आप पूछ सकते हो, that is your WhatsApp group. You can ask there. Those who are new and they are not in the WhatsApp group, send your phone numbers to me. I will add you in the WhatsApp group, or this is the link I will send at the last. You please wait. I will ask you to join the WhatsApp group, and this is the class code. If you are not in the class, you can join by the class code also. Fundamental training, I hope everybody has started. धीरे धीरे करते जाइए. It will be easy for you to go through. Then check your skill checklist, that everything whatever you know or I am teaching, it's whatever is there, you are going through it or not. 1 minute, let me stop this notification. Okay, now day 3. Today we are going to learn 3 things, that is Google Slide, Google Sites and Google Form. So first I'm starting with Google Form. This is the checklist, what we are going to learn. You will be able to create Google Form, add, edit different types of question, choose response destination, edit form settings, send a Google Form to the user, view responses, using Google Form for feedback, grading with Google Form quizzes, using Google Form as a grading rubrics, embed video in the Google Form. So what is Google Form now? These Google Forms we are using in our school also. It is used for quizzes, surveys, and feedbacks. Like daily, I am taking the feedback in Google Form only. Isn't it? Now, how to open this Google Form? I am just presenting my entire screen to show you. Okay. Again, there are 3 ways.
You can click on the new tab, go to this 9 dots or Waffle or Google Apps. You can click here and you can find Google Forms here. This is the icon for Google Form. The second way, type here forms dot Google. You will get you can take it from here. If you want a blank, you can take blank. If you want for quiz, you can take for quiz. Course evaluation, exit ticket, assessment. There are many. You can choose it from the templates. What is the use for what you want? Okay. These are all templates. And the third way is when you go to your drive, there on the left side, you get a plus sign. You click on this plus sign, you will find Google Forms here also. So 3 ways: through Drive, through Omnibox, through Waffle or 9 dots or Google Apps. Now coming to the Google Form, this is my new Google Form. I am clicking on the plus sign. So when we click here, we get the form here. This is the first question option. So first I will go for the questions. There are different. First you give the title for which you are making. It is a demo form. So I am writing demo. As you click here, you will find the name is changed here. You can give the description for what training teachers or whatever it is. You can give the description here. Then coming to the question part. Questions are of various forms here. Short answers. You want your child to give answer in 1 line or 2 line, you can give for short answers. It selects automatically. When you write question, it selects automatically, and sometimes we have to select. When you want a long answer, 3-4 lines, 5-6 lines, paragraph explanation part, you can go for paragraph writing. Multiple choice, if you want your child should select only one option from there, then we go for multiple choice, this circle one. If a question is given where multiple answers are there, we use this checkbox. This checkbox is used for multiple answers, like 2 answers are correct, 3 answers are correct. Then we take this checkbox. Then comes drop down. Like if I am giving a form to class 6, there are number of student, a number of sections. So simply I will use drop down and write there as 6 in the question, and drop down I will mention the sections. So drop down will come. Then file upload. If you want your child to upload something, like if you want a certificate to be uploaded, if you want a painting to be uploaded, if you want a doc to be uploaded, if you want any image to be uploaded, you can select this. Then for feedbacks, linear scale, and linear scale is there. जब linear scale select करते हैं, we get a option minimum or maximum. Minimum के साथ what you want, कि it was not interesting or less interesting, you give 1 marks. As you must have seen in my feedback form also. Or interesting, you can go for interesting and give presentable and interesting. You can see the preview how it will look. See, less interesting, presentable and interesting. So numbers are indicated. It can be till 10 also. You have to select the numbers from there. Then comes multiple choice grid. When you want your children like match the following option is there. Let me see. Rows or column. That question also I have given in one of my question in assessment. जहाँ पे the question was written and different thing was there, different answers were there.
लाइक कॉलम ए का कोई एक सेलेक्ट कर लिया, सेकेंड रो के लिए थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया. सो मल्टीपल, इट वाज गिवन इन अ ग्रिड एंड फ्रॉम देयर he can select any one options for one answer. Multiple answers are there, एक कोई check करेगा, and this is a grid form. Then comes checkbox grid. Now checkbox again used, there are two options you have to select. You can go for two option and select. Then come date. Date is used for if you are asking the birth date of child. So you can take, if you want a question like when was this war done, तो आप उस तरह के क्वेश्चन, डेट वाइज क्वेश्चन है, you can take it from here. Then time related questions can be dealt with this. कि what is the time, यहाँ पे टाइम के बारे में टाइम आप बता दोगे, क्वेश्चंस डाला और यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लेगा बच्चा. So these were few question types here. Then import questions. If you have some question in another doc, you can import it from here. When you click on here, कोई भी आपके, Smita ma'am, can you please explain about time? Yes ma'am. Can you explain about time again? Yes. If it is related to time, अभी नहीं ले सकते हैं, नहीं अभी हम busy. If it is related to time, wait. If the choice is related to time when see, I have only written time when you were born. It automatically take the rate. ठीक है, और डेट ले लिया मैंने, टाइम भी मेंशन किया, यहाँ पे टाइम आ जाएगा. ठीक है, द चाइल्ड विल राइट द टाइम. ओके, आई वाज देयर फॉर इंपोर्ट क्वेश्चंस. जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया क्वेश्चंस, इट हैज ओपन टू मेनी गूगल फॉर्म्स. अब मुझे किसी भी गूगल फॉर्म से कोई क्वेश्चन उठाना है, जैसे लाइक आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द फॉर्म, अगर मुझे वहां से उठाना है, आई विल सेलेक्ट दैट फॉर्म फ्रॉम देयर and I can take the questions from that form. See, the question is here, all the questions are there. Whichever question I want, I will click. जैसे मुझे name चाहिए, मुझे class के लिए drop down चाहिए, then I want this question to be there and import question. 3 questions are imported. See, class 6th का आ गया, ABCD section आ गया. This is a drop down. I will show you the preview. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, उसके बाद उसकी पिक्चर भी, जो इमेज था वो भी आ गया. आई हैव इंपोर्टेड ऑल द क्वेश्चन, यहाँ नेम कॉलम भी आ गया. सी द प्रीव्यू. सी, दिस वाज द ड्रॉप डाउन. क्लास 6 I have written and they can select the section and the picture was inserted because I have imported the question. Now coming next to add title and description. टाइटल अगर कुछ देना है तो वहां पे टाइटल हम दे सकते हैं. जैसे अगर गो टू द नेक्स्ट पेज या कुछ ऐसे टाइटल देना है, वी कैन गिव दैट टाइटल आल्सो देयर. यहाँ पे टाइटल दे देंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि दिस इज फॉर नाउ गो फॉर द, जैसे हमने दे दिया गो क्लिक, या जैसे हमारे होते हैं कि नाउ द क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव हो गया, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है. इस तरह के टाइटल्स अगर मुझे देने हैं इसमें, आई कैन गिव देयर एंड देन आई कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये सब्जेक्टिव हो गया. नाउ अंडर दिस सब्जेक्टिव, यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि क्या क्वेश्चंस है, कितनी मार्किंग है, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. देन यू कैन कंटिन्यू विद अनदर. देन इफ यू वांट टू इंसर्ट द इमेज, दिस इज इमेज ऑप्शन. You want to insert any image in your question, you can select from there the image. Google Drive, I've taken any image, or I want to search it from Drive. मैंने ले लिया logo of sheet. मेरे पास लोगो आ गया, मुझे क्वेश्चन क्रिएट करना है इसमें. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लोगो?
तो ये पिक्चर आ जाएगी. आइडेंटिफाई द लोगो. ठीक. अब इसके बाद आप क्वेश्चंस दे सकते हो इसमें. ये पिक्चर आ गया. अब यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, यू कैन ऐड बिलो द क्वेश्चंस. ये पिक्चर देख के दे कैन गिव द आंसर. क्लियर है? एक और होता है कि आप इसके साथ पिक्चर दे दो. तो व्हेन यू राइट अ क्वेश्चन, व्हेन यू क्रिएट अ क्वेश्चन, यू गेट अ ऑप्शन हियर टू इंसर्ट द इमेज. जैसे ये मैंने दिया है, क्वेश्चन लिखने के बाद इसी पे मैंने इमेज दे दिया है एंड आई हैव इंसर्टेड अराउंड विद द चॉइस. ठीक. एक होता है कि आप मल्टीपल चॉइस में भी यहाँ पे भी आप इमेजेस दे सकते हो. You can go and select it from there. This also I have given in few of the assessments. If you have seen, instead of writing, यहाँ पे मैंने option 1 लिख दिया और I have inserted a image here. Option 2 inserted an image. So from here also you can insert the image. It depends how you create the question, what are the questions you are using. Then to use, another question is when you want to insert a video. If you want a video to be inserted there, you can insert a video. If I say video, insert video on Google Map. Okay, I'm getting the video here on Google Map. Whichever video you like, you can select from here and insert that video. And you can give the question, और उससे related और भी questions देखना है, नीचे देना है, you can insert it accordingly. See the video, यहाँ पे हमने title ला दिया, watch the video carefully and answer the following question given below, and they can answer the questions there. So any doubt in this? Smita ma'am, can you play that video, because when I tried with that, only the basic image was seen. Ma'am, the students will be able to see na when we give them the form with the video. You can see in the preview what and how the form will look, what the student will listen. Okay? Okay. Clear? This you can see in the preview. When you go and select the preview, you can see there how the form will look, how the things are working or not there. You can see it in the preview. Where to see Clear, preview? everyone? Yes? Where to see preview? This is the preview button. I am coming to that, ma'am. Okay, okay. Ma'am, when we have to insert questions like match the pairs and all, तो उसके लिए multiple choice grid वाला choose करेंगे ना? हाँ जी मैम. और मैम और एक क्वेश्चन था, आपने बोला कि जैसे if I have already made a paper and I want to copy couple of questions from that paper, I select that and insert. But then, for example, if I want to copy the heading as DPS Nasik and question paper and the subject ये, तो ये भी सारा मैं वहां से कॉपी कर सकती हूँ? मतलब अगर कोई the theme you are asking, हाँ, you are हाँ. asking about the theme. Yes, so I'm coming to the theme, ma'am. Okay, ma'am. Okay. आप उसके लिए और भी एक बहुत सिंपल है, you copy that form. You copy that form, theme आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सेटिंग्स भी वो सेम हो जाएगी एंड देन यू चेंज द क्वेश्चंस डिलीट करके अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं. और अगर नहीं है तो जो थीम है उस थीम को आप लेकर के सेव कर लीजिए अपने डेस्कटॉप पे, अपने ड्राइव में कहीं पे भी, एंड देन यू कैन इंसर्ट इट. ठीक है. After the questions, I think I have dealt with all the questions. Then this is the part of section. अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड हो, लाइक फर्स्ट सेक्शन में यू वांट द ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट, नेम, क्लास, हाउस, व्हाटएवर इट इज, एंड इन द नेक्स्ट सेक्शन जब नेक्स्ट बटन आता है, जब पहला वाला इंफॉर्मेशन भर लेंगे तब दूसरे वाले फॉर्म पे जाए
So you can create a section here. तो पहला वाला करने के बाद ही दूसरे सेक्शन में बच्चा जा पाएगा. So पहला वाला सेक्शन जरूरी हो गया. जब वो उसको फिल कर लेगा देन ओनली ही कैन गो. जैसे हिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर लिया, अब ज्योग्राफी के पेपर में आना है, तो दिस सेकंड सेक्शन इज फॉर द ज्योग्राफी. थर्ड सेक्शन कैन बी डन फॉर द civics. It is like that. Section is that. Yes, Ishan sir. मैम सेक्शंस को सेग्रीगेट कैसे करेंगे? सेक्शन को सेग्रीगेट कैसे करेंगे मैंने अभी दिखाया ना. ये सेक्शन बन गया, ठीक है. लेट मी शो यू इन द डेमो प्रीव्यू पार्ट. ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, दिख के. हाँ जी मैम, हाँ जी. जब बच्चा ये वाला पार्ट पूरा फिल कर देगा तब वो नेक्स्ट ऑप्शन में जाएगा, दूसरे में जा पाएगा. आपको ये वापस ले आएगा यहाँ पे कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, यहाँ पे कुछ भरिए, उसके बाद ही वो आगे जा पाएगा. ठीक है. आइडेंटिफाई द लोगो है यहाँ पे. ये आंसर कोई भी दिया मैंने यहाँ पे देखिए टाइम वाला जो मैंने भेजा, यहाँ पे टाइम बच्चा इजीली फिल कर सकता है. इट इज PM और AM, और ये टाइम वाला क्वेश्चन था. यहाँ वीडियो इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे मुझे टाइम भरना पड़ेगा. एंड देन आई कैन गो फॉर नेक्स्ट. इस तरह से नेक्स्ट में मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बटन आपको नेक्स्ट वाले सिलेक्शन टूल पे उस पे ले जाएगा. ठीक है, क्लियर है? ओके मैम. Okay. So after this, after creating all the question and sections, then we move to response. अब बच्चों ने फॉर्म भर लिया. Where to see the responses? So ये आपको response sheet आपको देता है. That is a Excel sheet. So you click on this, and if you want to create a new spreadsheet, और पहले से कोई spreadsheet है उसी के अंदर आपको चाहिए, तो you can go for select existing spreadsheet. जो पहले से होगा उसमें दे देगा, और नहीं तो वो एक नया क्रिएट करके आपको नए वाले शीट में देगा. तो आफ्टर सेलेक्टिंग दिस यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. ठीक है. नाउ जब आपको लगा कि आपकी पूरी क्लास ने फॉर्म कर दिया है, या जैसे हम टेस्ट लेते हैं, तो हमने आज 20 बच्चों को दिया, 20 बच्चे में से 5 बच्चे और नहीं आए हैं, यू क्लोज दिस रिस्पॉन्स. तो कोई बच्चा नहीं दे पाएगा, या टाइम पीरियड के बाद ये रिस्पॉन्स हमने बंद कर दिया, मुझे इसके बाद आंसर्स नहीं था, ये टाइम स्लॉट था, मैंने एक स्नैप टेस्ट लिया, द टाइम वाज ड्यूरेशन वाज फॉर 3 आवर्स. 3 आवर्स के बाद हमने रिस्पॉन्स लेना बंद कर दिया. तो यहाँ पे हमने इसको, इसके जो एक्सेप्ट करने का वो बटन है वो हमने बंद कर दिया, और वहां पे जो भी स्टूडेंट होगा उसको ये ऑप्शन आ जाएगा, दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स. इस तरह का मैसेज उसके पास, जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेगा वो ये दे देगा, जैसे जनरली हम लोग देते हैं इसमें गूगल कैलेंडर में, ट्रेनिंग कैलेंडर में हम देते हैं, तो कहता है सीट फुल हो गई है और दिस फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टिंग. तो ये यहाँ से रिस्पॉन्स हम चेक कर सकते हैं. देन कमिंग टू सेटिंग्स. Setting, if you want your questions to be marked as numbers, you want to give value to your questions, so make it as a quiz. इसको ऑन कर देते हैं. जब इसको ऑन करते हैं हम, आई एम कमिंग टू द फॉर्म, क्वेश्चंस बैक. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में ये मुझे आंसर को मार्क वैल्यू देने के लिए बोलेगा. आंसर की, अभी तक आंसर की नहीं दे रहा था. अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले हम इस पे क्लिक करेंगे, उसके करेक्ट ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे, जो भी आंसर है उसके करेक्ट ऑप्शन को हमने क्लिक किया, एंड देन आई विल असाइन अ पॉइंट. अगर आपको लगता है 1 पॉइंट का आंसर है तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट का है तो 2 पॉइंट. अदरवाइज अगर मैंने क्विज नहीं बनाया था, इट वाज अ सर्वे फॉर्म और अ फीडबैक फॉर्म, कि आप बच्चों से सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आप उनको कुछ असाइन नहीं कर रहे हो, मार्क्स नहीं असाइन कर रहे हो. जैसे असेसमेंट के लिए जो मैंने शीट दिया, दैट वाज योर गिवन द वैल्यू देयर, पॉइंट्स दिया हुआ था. जो मैंने फीडबैक को लिया,
दैट वाज अ फीडबैक और अ सर्वे, उसके लिए मैंने वो एज अ क्विज नहीं किया था. इट वाज जस्ट अ सर्वे व्हेन यू आर नॉट गोइंग फॉर द क्विज. देन उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. मिस्ड क्वेश्चंस, बच्चों को पता चल जाए कि हाँ कोई मिस्ड क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर, जैसे ही वो काम करते हैं तो उनको करेक्ट आंसर वहां रिलीज हो जाए. पॉइंट वैल्यू उनको दिखे. यू डोंट वांट देम टू सी द पॉइंट वैल्यू, यू कैन क्लोज दिस. यू डोंट वांट देम टू see the answers, you can close this. If you want, after completing the quiz, they can see the answers, what was wrong, what was correct, they can go for it. डिफॉल्ट क्वेश्चन पॉइंट यहाँ से सेट कर सकते हैं कि सभी का क्वेश्चन पॉइंट 1 ही होगा, तो बार बार सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा ही ले लेगा 1 अगर आपने क्विज बनाया हुआ है तो. सो रिस्पॉन्सेज, अब व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज? यू वांट टू कलेक्ट द ईमेल एड्रेस. जैसे मैंने ईमेल एड्रेस का उसमें ऑप्शन नहीं दिया है, अगर मुझे तब भी ईमेल एड्रेस चाहिए तो जो भी बंदा, जो भी स्टूडेंट उसमें काम करता है, बाय डिफॉल्ट वो उसका ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर लेगा. हो सकता है कभी कभी स्टूडेंट जो है किसी और के आईडी से या टीचर्स या अपने किसी पर्सनल आईडी से फॉर्म भरते हैं, तो वो पर्सनल आईडी वाला जिससे भी उसने, जिस प्रोफाइल से उन्होंने वो फॉर्म को भरा है, दैट कैन बी कलेक्टेड हियर, पता चल जाएगा. सेंड रिस्पॉन्डर अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स. अगर इसको ऑन करते हैं तो बच्चे के पास वो पूरा गूगल फॉर्म विद द आंसर्स चला जाता है, एक कॉपी उसका. अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग. अगर आपने रिस्पॉन्स को चेंज करने का परमिशन दिया है तो वहां से आप चेंज हो सकता है. ठीक है. रिक्वायर साइन इन. आप चाहते हो कि डीपीएस वाराणसी का ही बंदा सिर्फ उसको करे, तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो. इफ यू वांट एनीबडी विद द लिंक कैन ज्वाइन, यू कैन क्लोज दिस, तो आपका क्लोज हो जाएगा. आपके अपने डोमेन का नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा. लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स. इफ यू वांट योर चाइल्ड टू अटेम्प्ट ओनली 1 टाइम, यू कैन क्लिक ऑन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, ऑन कर दीजिए. इफ यू वांट कि अगर ठीक है इस बार नहीं किया, एक बार अटेम्प्ट कर लेगा, तो इट कैन गो फॉर अनदर अटेम्प्ट. इसको क्लोज कर दीजिए. देन कम्स प्रेजेंटेशन. आपको अपने फॉर्म में क्या क्या चीजें देखना है. प्रोग्रेस बार, सफल क्वेश्चंस. आप चाहते हो कि जब भी कोई क्लिक करे क्वेश्चन सफल हो जाए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर क्वेश्चंस हो जाए, जिससे कि बच्चे एक दूसरे को बता ना पाए. यू कैन सफल द क्वेश्चंस. लेकिन इस वाले पॉइंट में आपको फिर वो जो सेक्शन हमने बनाया था वो सेक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, तब शफलिंग हो पाती है. कंफर्मिंग मैसेज, जैसे इसमें है वेल डन, कीप इट अप, कीप इट, योर रिस्पॉन्स इज रिकॉर्डेड. ये तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, योर रिस्पॉन्स इज रिकॉर्डेड. इफ यू वांट टू एडिट एंड वेल डन, यू वांट टू राइट हियर वेल डन, यू कैन राइट हियर वेल डन ऑल्सो. तो जैसे ही फॉर्म कंप्लीट करेंगे तो वहां पे वेल डन का मैसेज आ जाएगा. शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स. अगर आप चाहते हो कि अनदर दूसरा रिस्पॉन्स का आपने वहां पे वो दिया है, तो फिर ये रिस्पॉन्स फिर से दिखाएगा. सो ओनली दिस मच इज देयर फॉर लेवल 1. ऐसे तो बहुत डीप है. देन कमिंग टू द थीम एंड चूजिंग द इमेज. You want your theme, like right now you can see the pictures, everything in a purple color, because the theme is selected purple here. I want it in orange, so everything turned, the text, everything is turned in orange color. You want it green, you can change it. Background color you want to change, you can change the background color. You can change it what here, from here. This is according to the theme. जब आपने red लिया है तो यहाँ रेड के कलर्स ऑप्शंस देंगे, ब्लू लिया है तो ब्लू के ऑप्शंस देंगे. देन फॉन्ट स्टाइल, यू कैन यूज विच एवर फॉन्ट स्टाइल यू वांट, यू कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल. देन कमिंग अप एंड चूजिंग द हेडर, जो ऊपर से हमने हेडर ले लिया था, जैसे आपने कहा था डीपीएस वाराणसी का हेडर देने के लिए. तो देर आर by default there are pictures in the library here. You can select it from here also, any picture. ठीक है, यहाँ से भी ले सकते हैं. इफ यू हैव लाइक डीपीएस नासिक, डीपीएस नागपुर या डीपीएस वाराणसी का अपना एक लोगो होगा, यू सेव दैट पिक्चर एंड यू कैन ब्राउज एंड यू कैन सेलेक्ट एज अ थीम हियर. I don't have right now that picture, otherwise I would have shown you how to go for it. या आप ब्राउज करोगे तो आपने जहां पे भी सेव किया होगा, you will get that picture and you can use that picture. Then
कम्स फोटोज, अगर कोई फोटो को आपको वहां लगाना है, यू कैन टेक द फोटोज फ्रॉम द लाइब्रेरी. अगर वो इमेज आपके पास होगी, so you can put it. I don't know, I don't remember even कि मेरे पास है, so I can use it. So you can use it from there also. So like birthday का मैंने लगा दिया. You can change the theme. birthday का कोई celebration का form बना रहे हो आप कर सकते हो, and you can add there. You can see it has been added here. This is what you were asking, no ma'am? Yes, ma'am. Okay. So this is how you can change. Okay, you can see the preview, how the form will look. Because I have closed it, it is saying that the form is no longer responding. अब मैंने इसका response अगर खोल दिया, तो it will accept. मैंने refresh कर दिया. ठीक है? Now sending the form. अब मैंने form तो prepare कर लिया है. अब मैं बच्चों को कैसे भेजूं? तो this is the option of send. Send पे क्लिक किया, you will send it, you can send it through mail. You can create a link and place it in your Google Classroom. यहाँ पे लिंक आप इंसर्ट कर सकते हैं. You can embed it any of the document if you want. यहाँ से embed कर सकते हैं. Generally we send a link. शॉर्टन करते हैं, लिंक को छोटा बनाते हैं. अगर हम शॉर्टन नहीं करेंगे तो लिंक इज वेरी बिग. तो उस URL को हम शॉर्टन कर देते हैं, छोटा बना देते हैं, देन कॉपी एंड पेस्ट एनीवेयर. तो अब you can work on this. See, I'm sending this form here in the WhatsApp message box. You can click and see how it looks. Now after this, coming to these 3 dots, you can make a copy of a form. अगर आपके पास कोई फॉर्म है, उसकी कॉपी आपको बनानी है, you can make a copy of that form. You can move it to the trash. Get pre-filled link. पहले से ही फिल किया हुआ लिंक है भरने के लिए. You can add collaborator. You want your teacher to be added in this, कि वो भी इसको देख ले कि फॉर्म सही है, क्वेश्चन सही है कि नहीं, एक रिव्यू के लिए. या आप चाहते हो कि वो भी इसमें कुछ एड ऑन्स कर दे, तो to your colleagues you can add as a collaborator. Add collaborator करते ही हमारे पास एक मेन्यू खुल जाएगा, and you can add the name of that teacher. As an editor you want them to see, they want to change their something, or notify them with the message here. Whatever they have to do, they can write the message also and you can send. ठीक है? This was Google form. Any doubt anywhere? Yes, Roshni ma'am. मैम जब हम शफल करेंगे क्वेश्चंस को, तो शफल की हुई चीज जब हम शीट पे लेंगे, तब उनके नाम के हिसाब से फिर वो क्वेश्चंस भी शफल हो जाएंगे ना? नेम वाली भी अगर हमने उसमें लगा, नेम सेक्शन को आपने अलग कर दिया है वो करके, तो आप कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन को सफलिंग कर देगा वो. यस प्रवीणा मैम. मैम एक छोटा सा डाउट है. कभी कभी हमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन जो इमेज उस क्वेश्चन के साथ वहाँ होती है उसको पैरेलल इमेज नहीं मिलती है, अगर हम फॉर्म में से ढूंढने के लिए जाए तो. अच्छा. उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? आपने ये फॉर्म देखा? यस. ठीक है, इसको राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी इमेज एड्रेस आ जाता है. अच्छा. यू टेक दैट इमेज फ्रॉम हियर. ठीक है, और जब आप इंसर्ट करते हो, मान लीजिए मैंने एक नया क्वेश्चन इंसर्ट किया यहाँ पे, अब मुझे ये इमेज यहाँ पे चाहिए. ठीक है, मैंने क्लिक किया, ये बाय URL कर दिया, और ये इमेज को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया. कैन यू सी दैट इमेज? यस यस यस, थैंक यू. ये आ गया. ठीक है. या. Okay. Now moving to the next topic, Google Slides. I hope there is no question regarding that.
Google Slides. So this is the checklist. Add link to a presentation. Adjust the color, font and theme. Add a video to the presentation. Add an image to a presentation. So again, moving to a new tab. All three ways are there. You can either go from 9 dots. You can select slides from here. You can write here slides dot new dot, if you want a new one, so you can type new google.com or you can go from your drive, same plus sign and Google Slides. This is the icon for the slide. So this is open. All the slide which I have made, it is here. I want to go for a blank one. I will click on blank slide. First of all, I don't want this title box, this subtitle box. So you go to the layout and change it. I want a blank slide. I don't want that title or subtitle there. So select the blank one. Change the background. If you want a background, you can change the background also. You can select the theme from here. Theme जो आपका, जैसे आपने select किया कोई डिजाइन. So this will continue for the all slides. अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो आपकी किसी स्लाइड से कोई थीम, तो यू कैन इंपोर्ट इट फ्रॉम देयर ऑल्सो. आप सेलेक्ट कर लो कोई भी स्लाइड और आप वहां से इंपोर्ट कर सकते हो उसकी थीम. इफ यू हैव एनीथिंग समथिंग टू अपलोड, कोई पिक्चर ऐसी है जो आपको एज अ थीम लेना है, वो आप यहां से ले सकते हो. सो आई हैव सेलेक्टेड दिस थीम. ठीक है. नाउ आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग. चेंज बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया. Now you can see in the layout, if I want to check, I can take the layout. मैंने यहाँ पे heading दे दिया. मैंने लिखा presentation. Demo class. So the theme I have taken, ये theme तो वही है, मैंने background का color उसका change कर दिया है. Now I can insert a new slide. यहाँ से मैंने गई. एक्सक्यूज मी मैम. Yes ma'am. आप एक बार फिर से इसको बताइएगा. Okay. So I have to insert a theme. मैंने यहाँ से कोई भी theme ले लिया. ठीक है. The theme is selected. Now I want to change the color of the background. तो background पे हम जाएंगे या यहाँ से भी हम ले सकते हैं. Background का color हम change कर देंगे. Change background color. You can take gradient colors. बहुत ज्यादा अगर ये आपको वैसा लग रहा है, you can change. ठीक है. ओके मैम. ओके. आपने बैकग्राउंड चेंज कर दिया. नाउ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड. इंसर्ट न्यू स्लाइड और यू कैन प्रेस द कीबोर्ड शॉर्टकट. दिस इज कंट्रोल प्लस M. So you can select it from there and insert. If you want a duplicate slide, you can add press control plus D for duplicate slides. So you got a slide here.
मुझे डुप्लीकेट चाहिए, मैंने कंट्रोल डी कर दिया. I have not given a name to this. Control D. I got a duplicate. मुझे नया इंसर्ट करना है. I can go for insert option also. तो नया भी इंसर्ट हो जाएगा. But the theme I have selected this was there. तो थीम आपका चेंज नहीं हुआ. बैकग्राउंड आपने चेंज कर लिया थीम का. ठीक है. दिस वॉज हाउ टू इंसर्ट. अब मुझे ये लेआउट चेंज करके मुझे ब्लैंक लेआउट चाहिए. मैंने ले लिया. मैंने इसका कलर चेंज कर दिया. Now I have to insert an image. इसमें मुझे इंसर्ट करना है. Yes, somebody said something. Yes, मैम. सोनल मैम. स्मिता मैम, वो ऊपर जो कॉर्नर में प्लस साइन है उससे भी ऐड कर सकते हैं ना स्लाइड्स. जो कॉर्नर में प्लस साइन है उससे भी अगर यहाँ से लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं. से भी हाँ लेआउट कर और सकते यहाँ हैं. से ऐड भी कर सकते हैं. ठीक है. अब now you have to add an image. You can add image from here also. आपको अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, सर्च फ्रॉम द वेब, ड्राइव से लेना है, फोटोज से लेना है, किसी यूआरएल से लेना है या अपने कैमरा से लेना है. मतलब you want to click that photos. So you can click it. मैंने क्लिक किया, मेरी फोटो इंसर्ट कर दिया. ठीक है. So I hope all options you know. If I have to tell each and everything, I can tell. Upload from computer. If you have any picture on the device, you can take it from there. Search from the web. अगर मुझे कोई search करनी है picture, तो I can search it from here. I want a picture of a girl. थोड़ा सा. I want any picture of a girl. I can insert that picture also. It is inserted. ठीक है. GIF मैंने बताया था उसमें कैसे इंसर्ट करना है. डॉक में जैसे मैंने बताया था. Same here also you can search for that. Images. आपको सर्च करना है. यहाँ से सर्च किया आपने या कहीं से आपको लाना है, वहां से उसका URL ले लिया. मैंने यहाँ पे बर्ड की लिए फोटो लिया. मुझे यहाँ टूल से चाहिए कि वो बर्ड टूल्स दिखे मुझे. इमेजेस पे जाऊंगी मैं. मेरा टूल्स दिखा. मुझे ट्रांसपेरेंट पिक्चर चाहिए. मुझे GIF चाहिए. GIF आ गया. अब मुझे ये चिड़िया थोड़ी सी उड़ती और कहीं दिखती, ये दिख रही है. मैंने यहाँ से इसको कॉपी इमेज एड्रेस लिया. मैं वापस अपने स्लाइड पे आई और मुझे ये चिड़िया यहाँ पे चाहिए. तो आई विल गो टू इंसर्ट इमेज बाय URL और हमने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया और ये चिड़िया मेरे पास आ गई. ट्रांसपेरेंट वाली उड़ती हुई चिड़िया. ठीक है. This is how you can insert the image. Adjust the color and font. अब कलर्स आप फिल कर सकते हो. किसी भी शेप को लेते हो तो यहाँ से कलर फिल कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप ले लिया. This I have taken a shape. यहाँ पे आप कलर फिल भी कर सकते हो. इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो. कोई शेप है, टेक्स्ट बॉक्स है, कुछ भी है. आप टेक्स्ट का लाइन चेंज कर सकते हो. आप इसके अंदर फिर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके अगर लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो. यहाँ पे आपका टेक्स्ट का कलर आप डिफरेंट कर लो सो दैट इट इज विजिबल. मैंने लिख दिया यहाँ पे. ये बॉर्डर मैंने येलो कर दिया था. टेक्स्ट की लाइन में इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा दूं और आई कैन चेंज द फॉन्ट कलर फ्रॉम हियर. कैन यू सी? Yes.
सो Yes, फॉन्ट ma'am. कलर हो गया, बॉर्डर लाइंस भी हो गई, हमने येलो कर दिया और उसके बाद टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दिया. Now after this, adding a video to a presentation. Now how to add video? I am inserting a new slide. I'm inserting a new slide. Insert video. Okay. I am taking a video link. यहाँ से मैंने कहा कि मुझे जंगल या बर्ड की मैंने पिक्चर लगाई थी, मैं बर्ड पे भी ले सकती थी, मुझे एक वीडियो चाहिए जंगल पे, मैंने ले लिया. मोगली. हाँ, जंगल पे मोगली भी ले सकते हैं, मोगली का कोई वीडियो. ठीक है, अब दिस इज अ वीडियो. मैंने इसका यहाँ से या यूट्यूब से भी हम वीडियो ले सकते थे. ये ओपन किया, इसका लिंक ले लिया. I write a lot of essays for school, but I also write sales descriptions for my Etsy shop. I use Grammarly on my work emails and also on my cooking blog. Grammarly is a यहाँ से मैंने लिंक लिया, इसकी कॉपी किया. This is copied. Coming back to my presentation. I'm not getting video option here. Why is it like that? I don't know why. Right now I'm not getting. Okay, let me add to my this presentation. एक और presentation में मैं देख लेती हूँ. Why I'm not getting. We get simply a video option, insert, audio, insert. मैम उस लिंक को पेस्ट करके हाइपरलिंक किया तो नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐड हो जाता है मैम. Yes, ईशांत सर. मैम डायरेक्टली तो ऐड नहीं होता है, वो तो हाइपर लिंक पे जाएगा. हम लोगों के इंसर्ट में तो आ रहा है वीडियो. हमारे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ना इस समय. या नीचे था मैम. ये मैंने वीडियो ऐड कर दिया. This video has been added here. Please explain again. Take the URL from there. Share the link. ये जो link है, just take the link from here. Come to demo. हाँ. ठीक है. Let me take here. आप यहाँ पे किसी कोई एक word भी लिख सकते हो. ये वीडियो है. हाँ. वीडियो पे क्लिक किया. By URL. You can click on here. And insert. The video is inserted here. Okay. Okay, you can increase the size of the video. Now the video is inserted. Now you don't want that video to play for 11 minutes. This video is of 11 minutes. Can you see here right side? You don't want that video to play for 11 minutes. आपका जहाँ पे भी पार्ट खत्म होता है, आप वहां पे इसको स्टॉप कर सकते हो. यहाँ से आपने यूज करेंट टाइम कर लिया, करेंट टाइम से स्टार्ट हुआ, एंड वेयर यू वांट टू फिनिश इट अप यू कैन क्लिक हियर एंड इट विल स्टॉप हियर. नाउ सी, आई हैव मेड दिस वीडियो ओनली फॉर द 9 minutes. This is saved now. When I will play this video, it will play only for 9 minutes.
See, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वीडियो यहीं तक चलेगा. इट इज नॉट गोइंग टू कंप्लीट. ये थोड़ा सा ही 9 सेकंड का जो मैंने वीडियो लिया था अपने आप स्टॉप हो गया. So you can restrict the timing from here. Ma'am, can you just please repeat this process once again, Smita ma'am? How to restrict the timing? Okay, you have inserted the video, you know it. Yeah. ठीक है, वीडियो इंसर्ट कर दिया. और अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है लेफ्ट साइड राइट साइड में, you click on this picture and go to format option. Okay. When you click on this format option, they will get this thing here. ठीक है, अब यहाँ पे इस वीडियो का स्टार्ट किया and you play the video. You get an option here. Start and stop. नदी पार करने का ये बढ़िया तरीका है. You can restart it. You can check the timing. यहाँ से check कर लिया. Use the current timing and use the end timing. अब end timing आपको जो भी लेना है, you can select it from there. Use current timing. मुझे अच्छे से तैरना आता है. अब है थोड़ा मस्त. We can take any start time and end time, ma'am. हाँ, you can take any start time. You can take any end time. Okay. And if you want, That means we have to decide. yes, if you want your pictures to be played automatically, जैसे ही slide change हो और वो आपकी videos चलने लगे, तो you can make it play automatically जैसे ही slide change होगा. And if you want manually to play, तो play करने के लिए आपको manually इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा and then it will be play on click. If you want your video to be muted and you want to speak, you can mute the audio from here. Okay? Understood, ma'am. Thank you. So I think this was all what I have to explain today. Adding link to a presentation, we have added the image link, we have added the video link, adjust the color, font and theme, we have done it. Add a video to a presentation, add an image to a presentation. I hope this much is clear. Any doubt anywhere? Only a small doubt, ma'am. Initially, you showed that 2 boxes which are coming, click to add here, that can be cancelled. So how to do it? Can you please say? Okay, this one. वो जो 2 boxes आते हैं. हाँ जी, वो layout है मैम. You can change the layout. This is layout. You want this layout, your boxes you don't want. You want to change the layout, you can change it. यहाँ पे गए, you get the layout option. You want a blank side, you can take a blank. It is according to your choice. If you have any question where you want to differentiate the things, you can take 2 boxes, 2 pictures you can insert. It is on your choice. You want to give a heading, you can take this. Layout we have to select. Layout. Okay, thank you. Okay. So that's all for the slide. Now moving to, you can collaborate also the slide. You can share it as an editor, as a commentator to anyone. Okay? You can add it. You want that person to be as an editor or viewer or commentator. You can change this. You want a link to send somewhere that everybody can view. The one who is having that, anyone with the link can view this as a viewer. Copy the link. Post the link wherever you want, like I have pasted in the chat box. And जो भी इसको click करेगा, as a viewer he can view the slide. Clear? Now moving to the next. This is Google Sites. Sites, like पहले जब websites हम बनाते थे, it was very difficult. We have to do some codings and all. Now Google has provided a very good platform here where we can make our portfolios, even our whatever the certificates are there, whatever the things are there, whatever the documents are there, important files are there, we can store at one place, that is Google site. And if you want that to be published and your children should also see, others should also see, you can publish that site also. So today in the checklist, we have to create a new Google site, add and remove pages, adjust your site's theme and layout, add content, video, images, link, etc.
share and publish your site. Again, coming to the new tab, same from Waffle, you can go to the site. This is the icon for the site. From here, you can write sites.google.com. From the drive, you can click on plus sign. You can go to more option, and here you will find Google Sites. So same 3 ways. मैम डायरेक्ट ड्राइव से भी आ जाएगा मैम. ड्राइव से लेना इसलिए अच्छा होता है कि आपका एक फोल्डर में वो सेव हो जाता है, विच एवर फोल्डर यू वांट. जैसे मुझे अगर ये साइट जो है, मैंने एक फोल्डर बनाया, मैं बनाई थी बच्चों के लिए गूगल साइट का एक फोल्डर जिसपे हम काम करते थे. लेट मी शो यू. ये वेबसाइट फोल्डर, कैन यू सी हियर? मैंने एक वेबसाइट फोल्डर बना लिया. अब इसके अंदर अगर मैं क्रिएट करती हूँ, इसको ओपन किया, और इसके अंदर अगर मैं कोई भी वेबसाइट बनाती हूँ, यहाँ से प्लस करके क्लिक किया और मैंने अपने वेबसाइट्स बनाए, तो इसी के अंदर स्टोर है. मुझे मालूम है इजिली वेयर आई कैन फाइंड ऑल माय वेबसाइट्स. तो यहीं पे स्टोर मिलेंगे मुझे, इजिली आई कैन गो थ्रू इट. ओके मैम, ओके, थैंक यू. ठीक है. सो गूगल साइट्स ले लिया. आई एम गोइंग फॉर न्यू वन. सी दिस इज अ website of my GG, Google Education Group, Varanasi. This I have created. I'm showing you. Being a leader of GG Varanasi, so this was created by me. You can see the preview of this, how it looks. This is the website. Here I have added the link, WhatsApp group, YouTube channel, which I have, Twitter, Instagram. When I click here, I will reach to my channel also. This is my channel. Here all the videos are uploaded. So this is how you can make your own website and you can create everything there. This is a WhatsApp group. If you want to join this WhatsApp group, you have to click this join chat. This is an Instagram. So you can go on my Instagram page and you can see. So this is how you can create your website. Now let me close this. Going back. Now, this was the website. One of my students also created a beautiful website. I want to show you that also. They have created their portfolios. Show you a portfolio. This was created by one of my students. See, you can see the preview. This was the portfolio created by her. Now here are different pages. If I want to see the relatives, I can go to the relative page and see the relative here. Hobbies. What are the hobbies of my student? I can check it from here. SDG, SLC, others, co-curricular activities. So it was given as an assignment when I was teaching in the class. So how to go for this such type of portfolios or your own website? So click on this blank portfolio. There's blank Google site. You will get this page. Give a title to this. I've given demo. Now
Here you can give a title again here, header, Smita. If I want to add any picture as a logo here, I can upload the picture from my computer. If I don't want to upload, I want to select something from the Google. I can search from here. I want to search education logo. There are different pictures coming. I have selected one of the picture here. Got the insert, and see the picture is inserted here. Can you see the picture here? This logo has been inserted here. Yes, now I ma'am. want to change the name here, header name. I want this as a portfolio. I've changed this. I want to change the font style. I can select any other font style. I want to make it bold. I want to make it a little bit italic. I want to underline it. I want to change the color of this. I can change the color, and thing is created. Now I want to change the image here. The background है that I also want to change. So I will select either upload from my computer. You will get the two options, upload or select image. If you want to upload it from your system, you can upload it. If you want to select it, again you can go. So there is a ready-made gallery also. You can select it from here. If you don't want it, you want something from the search, you can take it from there. I want a portfolio. I want people's here, picture of people. So I got picture here, or I can take this one. So this is at the background. Now, after changing the image, you want this header, you want to change it. You want it as a cover page. तो बड़ा आ जाएगा. You want as a large banner. You can see it. Cover page, banner, छोटा size हो गया, and title only. So no picture will be reflected, only the title will be reflected. So this is my banner. This is done. Now I have to insert an image here. So insert option is, you can see the tab here, insert. Image is also given there. Click on image. Again, two options will be given here, upload or select. If you have something on your system, you can upload it. If you have something you want to select it, you can select it from your Google Drive. I want to take from my drive. Like this is my portfolio. So I want my picture to be here. I'm going in my, I have my picture here. I want this picture to be inserted. I have inserted my picture. And if I want to write about myself, I can write it here. I can insert the text box also, and I can write here. You can drag and put the text box here also. And you can start writing here, whatever you want to write. Now, after writing this, this is looking white. I want to change the color of this. You can change the color also of this. This is according to the theme which you have selected. So this is my blue color theme. So it is looking blue. If I change the theme from here, I want it pink, it will be changed. Now, if I want to insert an image at the background, I will go for upload or select again. Select kiya, same, I will get a gallery from where I can select any of the image for my background.
and I have written something here. Now, this was the home page I have created. Now I am moving to pages. I want more pages here. ये home page तो already है. I want one more page there. So I will click on new page option and I will give a name that level 1. So a new page is inserted here. Can you see here? A new page is inserted. And whatever I want to write, I can write. When I move to the home page, I will see the level 1 page is here. I will click the level 1 and I can reach here. Now if I want under level 1, जैसे अनन्या के पोर्टफोलियो में मैंने देखा था, उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी. उसके नीचे under level 1, I want to create a sub page. So I have given level 1 training day 1. Done. Ma'am, please repeat this part, how you got the fresh page. Fresh page, this is the plus sign for the fresh page. The plus sign, I want a new page. I have written here level 2. Done. So another page is created. If you want a drop down menu here, you want under this page another page, so you can go to level 2 and click on sub page, add sub page, and then you can create training day. So can you see, when you click on this, you get training day 1. When you click on this, another training 1. So under this, different pages are there. If you want this page also image to be changed, you can select the image, you can change the image, और same procedure जैसे मैंने first page पे किया था, same procedure you can do it here also. You want to change the header type, you can want a banner type like this, you can do it. Clear? And now you want to look how your website looks. Come to the preview part. This is the preview part. This is your home page. So this is when you are previewing it, it gives an option. You want a phone preview, you want a tablet preview, or a screen, large screen preview. Whichever you want, it will show you according to that, how it looks on your page. Now this is the menu where you created the page. Home page, level 1. You want to go to level 1, you can go to level 1. You want to go to level 2, you can go to level 2. If it is on the tablet, it is showed like this. You can go, come to the home page, cross it, come back to the original mode. I can see somebody has raised the question, a hand. Yes, Ishan sir. मैम जैसे लेवल 1 में हमने एक सब पेज बनाया था, वैसे और भी मोर पेजेस हम ऐड कर सकते हैं उसमें? Yes sir, you can add more pages. हाउ कैन वी ऐड इट मैम? ये जैसे ट्रेनिंग हो गया, लेवल 1 में मुझे और सब पेजेस ऐड करना है, यू कैन ऐड सम मोर पेजेस. ओके, विद डिफरेंट नेम्स. With different names. ओके फाइन. थैंक यू मैम, थैंक यू. Level 2, now it is training 1 and ABC. ठीक है? Yes ma'am, thank you. So creating a new Google site, add and remove pages. If you want to delete the pages, you can come to the website, you 3 dots and delete the page. So you can remove also the pages. Then create a new Google site, adjust your site theme and layout, which I told you here. This was the theme. Whichever theme you select, it will work accordingly. It is changed. आपके theme के according आपका change हो गया. You select the color, whichever color you want. Ma'am, how to delete the page? Pages. I don't want this page. Training 1. Okay, 3 dots. 3 dots. Delete Okay. it. Okay. Now the layouts.
This is the layout here. You want to insert something like this, 2 pictures with a text. So you can click on plus sign, you can select the image here. Google search, trees, taken the picture, insert. Now you want to write something about trees, you can write here. These are all layouts. जैसे आपको चाहिए, you want to 2 pictures like this, you want like this, you want like this, you can select it and add on. Okay, if you don't want, you can delete it. If you want a duplicate copy of this, you can make a duplicate of it. Clear? Now, how to publish or send. This is the plus point. If you want other teacher to be collaborated here, you want that teacher or that children can work along with you, you can share the link, add the person here. Okay, you can add the person here as an editor and you can send the link. If you want a link to be shared in your organization, you can select it. Delhi Public School, public, remove link, whichever link you want, you can take it from here and you can send it. Then comes publish. When you publish it, यहाँ पे you have to give a name. अगर मुझे publish करना है, I want to publish, जैसे ही मैंने demo लिखा, it has given me an address here. Can you see http://sites.google.com, dpsvaranasi.com, demo. This is the link. मैम पब्लिश के बाद कोई इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा, यही ना? नहीं कर पाएगा मैम. पब्लिश कर दिया आपने, उसके बाद भी आपने चेंजेस किया, देन अगेन यू हैव टू रीपब्लिश इट. जैसे मेरी ये साइट है, लेट मी कॉपी द लिंक, और मैंने पब्लिश कर दिया, ये लिंक ले लिया. You can copy the link from there also. After publishing, you will get the link. ये लिखा आपने, ये आपने publish कर दिया. It's great, but already taken. अच्छा, this has already been taken. So I am taking ABC, ABS. अब ये publish का link highlight हो गया because this was not name here. Publish. Now जैसे ही मैंने publish किया, आप यहाँ देख रहे होगे ये link की site प्रोमिनेंट हो गई है. यू कैन टेक द लिंक फ्रॉम हियर ऑल्सो. अब ये साइट पब्लिश्ड है क्योंकि यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू भी दिख रहा है. ठीक है. अब अगर मैंने यहाँ पे ABC की जगह मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया XYZ. ठीक है. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने चेंज किया है तो आई हैव टू रीपब्लिश माई साइट. ये देखिए दिखा रहा है कि XYZ आपने चेंज किया था, पहले ABCD था, अब ये चेंजेस हुआ है. आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर इट? इफ आई एम श्योर आई विल पब्लिश इट अगेन. ठीक है. चेंजेस आर मेड. ये आपके ही जगह पे चेंजेस हो गए हैं. नथिंग इज टू बी टेकन एज अ लिंक. लिंक वही रहेगा. ठीक है. चेंजेस आपने किया और पब्लिश कर दिया, रीपब्लिश कर दिया. ये ईशान सर. मैम कोलैबोरेटर्स भी चेंज कर सकते हैं या सिर्फ आप? कोलैबोरेटर इसमें चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि आपने एज अ कोलैबोरेटर लिया है. वहाँ पे एडिटर राइट देंगे उसको, उनको? एडिटर राइट है. ओके ओके ओके. ये कोलैबोरेटर जब भी हम ले रहे हैं, यहाँ पे हमने जैसे किसी को भी लिया तो यहाँ पे राइट हम दे रहे हैं. पब्लिश्ड व्यू देखना है उसको कि एज अ एडिटर भेजना है. ठीक है. ओके 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 मैम, फाइन. Any doubt anywhere? Yes, Aditi ma'am. मैम बिना पब्लिश किए भी तो हम शेयर कर सकते हैं फॉर करेक्शन और एडिटिंग? बिना पब्लिश किए भी हम शेयर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं?
लिंक लेकिन आपको लेना पड़ेगा ना, वहां पे एज अ शेयर तो आप कर सकते हो, लेकिन लिंक आपको अगर किसी को देना है व्यू करने के लिए तो आप देख सकते हो वहां से। तो मतलब लिंक कर लेने के लिए मुझे पब्लिश करना ही पड़ेगा? हाँ मैम, पब्लिश करने से पहले जो यहाँ पे मतलब शेयर में प्लस आइकन दिखा रहा है, एक ह्यूमन बीइंग और प्लस आइकन, उस पे क्लिक करेंगे ना, लिंक के बगल में जो है। क्या बोल रहे हैं मैम? मैम हाँ, ये प्लस साइन पे दिखा है, यहाँ से आप शेयर कर सकते हो। हाँ जी मैम, वो वही वाला प्लस साइन वाला, प्लस साइन से आप शेयर कर विदाउट सकते पब्लिशिंग आल्सो वी कैन डू इट फ्रॉम देयर। हो। यस मैम। यस रोशनी मैम। मैम इसका क्रिएटिवली कहाँ कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब ये टूल का स्पेशली? आप जैसे मैंने देखा, मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, जीजी का मैंने बना के रखा हुआ है। आप स्टूडेंट से भी बोल सकते हो कि वो अपना पोर्टफोलियो बना दे, और स्टूडेंट का पोर्टफोलियो आप अपने पास रख लो, पेजेस वाइज आपके पास आ जाएगा, बच्चों की पूरी हिस्ट्री आपके पास होगी। ठीक है, अगर आपके बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपके वीडियोस है, आपके नोट्स है, यू कैन कीप इट ऑन दैट, यू कैन इंसर्ट वीडियोस, इमेजेस, एवरीथिंग हियर, डॉक्यूमेंट, Google Forms, everything you can store on that website. Okay. Roshni ma'am, we also make newsletter. Yes, You ma'am. can make a newsletter. I know one. It's like a newsletter ना मैम? Yes. No, other It's like a than that, newsletter जो अभी हमने पब्लिश किया है। Correct. Other than newsletter, Pravina, I was curious, where can we inculcate it? PBL reports. PBL reports. SLC PBL. Wherever you want your child's things to be reflected there, you can use it. Okay. Wherever you have stepwise presentations, all these pages can be utilized. There are many things, ma'am. You can insert images there, you can insert your slides there, you can insert videos your also. Videos there, everything can be inserted there. Normally in PBL, children do all these things. Yes. Okay, so I'm sending a feedback form here. Please fill this feedback form, and meanwhile the one who has any problem or any queries, you can ask. Yes, Aditi ma'am, you have raised your hand. Smita ma'am, you have shared slide demo slide 1. मेरे से बार बार क्यों गलती हो जाता है? चीजें सिखा रहे हो ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाता। कोई नहीं, बहुत सारी चीजें खुली हुई है ना। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं। आई एम सेंडिंग एन, ठीक है, व्हाट इट, दिस इज अ फॉर्म। एनी क्वेश्चन? I hope no doubts are there. As of now, none, ma'am. You will be posting the recording. जब हम assessment करते हैं तो recording देख लेते हैं। Yes, ma'am. I will be posting the recordings. Thank you so much. Okay. So now see you on day 4. Excuse me, ma'am. Yes. मैम एक क्यूरियोसिटी ये है कि हमारे जो अभी हमने किया साइट और गूगल प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, मतलब इसमें क्या एडेड दोनों में है? साइट मैम आपकी वेबसाइट है। ओके।